पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान के हमले के बाद अब दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात खराब होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजारत खारजा ने इन हमलों की मजम्मत की है और इसे आलमी कानून की खिलाफ वर्जी बताया है। साथ ही पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर भी वापस बुला लिए हैं और ईरान के सफीर को पाकिस्तान आने से रोक दिया गया है। इसके साथ ही दोनों ममालिक ने उनके बीच होने वाले सभी आला सतही दौरों को भी रद्द कर दिया है। वहीं दोनों ममालिक के बीच कशीदगी और बढ़ती दिखाई दे रही है। Of cordial relations between Iran and Pakistan. It was a sad incident that happened yesterday, and the government of Pakistan, especially the Ministry of Foreign Affairs, has already responded. We have taken some measures, and we are assessing the situation. We are also in the process of investigation what happened and when and who is responsible for it, despite the claims that have been made, but we would not rush to judgment. It was actually a challenging presidency, and it was challenging because we were confronting a very sharp east-west polarization as well as a very deep north-south divide. But we were very determined as the presidency of the G20 to make sure that this organization on which the world really had put so much